And then I asked her, what do you know about me or understand me about from my behavior? Because she said that I enjoy learning about people through their behavior. Then I asked her, what do you understand about me through my behavior? Because we had not spoken until then. And she gave some answers. Not unusual answers. Somebody with my kind of spirit would get those answers. They are almost compliment-worthy answers, so I don't want to speak about what those answers are. I'll ask the same question from you. You had 1 hour of a call with me. What do you understand about me so far? Have you read anything about me so far? No. What do you understand about me from the call? You can think. Right. You are capable of thinking. Everyone thinks we can think, but no. Thinking does not only mean कि आप चीज़ों के बारे में सोचो, but it also means कि आपके पास जो सेट से डेटा पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करो and you draw some conclusion out of it. Have you ever tackled the question of free will? Yeah. How much time have you spent on inquiring about what is free will? So not exactly, I've not inquired about it, but I've particularly thought about what free will is, and in today's generation I don't think there is anything like free will. Yeah. But have you scientifically looked to explore? Anushka, do you know why I called you here in this meeting? I have called you in this meeting because I feel that the lectures that I give are so incredibly significant for the world that at least someone else must learn something in their life which is real. If you're interested, then learn. Otherwise, you can leave. What do you think? Are you interested? No, yeah. Cool. So pay attention to what I'm saying. Have you ever academically gone into the topic of free will or researched why scientifically? Not everything. A few. Like free will has multiple implications in our life. For example, willing to think is one thing. Willing to do some action is another thing. Willing to buy a certain thing. Willing to eat a certain way. Willing to live a certain lifestyle. So we have multiple ways. I've had conversations with very good people who are into coding and AI and stuff like that. So they keep researching on things like that. So they have shed upon light for me on subjects where you can understand, कि every single thing that you do today, it is an influence from some other company. No academic thing as such, but कुछ चीज़ों के बारे में जैसे खाना पीना जो हो गया उनके बारे में I have read. Okay, so far you've spoken about will. Yes. Seems like you understand a little bit about the word free. But if you go into the experiments that have been done to understand whether human beings are mere puppets of something, maybe some divine force, or do they have any freedom at all? So you know what is the conclusion of the experiments of deepest science? I can give a guess. Yes. Yeah, we humans would love to be someone else's puppet. Yeah, okay, we love to be someone else's puppet, is true. We love to be someone else's puppet. Flat answer is because we are lazy. Yeah. But the truth is that we are that anyway. Whether we love it or not, it doesn't matter. There is no free will. Human beings are doing action, they think they are doing it by their freedom. But the truth is, no, that's not true. There is science to it. For example, if there is a ripple in a pond of water, then this part is governed by this part. This part is governed by this part. This part is governed by this part. Right? There is no freedom in this flow. So the truth is there is no freedom. But this wave is on something. That is the Shunya, the Nirakar, the Advait. The Advait is not this. This is also a wave. The Advait is this whiteboard. You get it? Yeah. This space is Advait. On this are waves. Waves originated at the point of something, the stone dropped in a pond of water. Now the ripples are not free. They are determined right at the point of origin. So I may say that all of you are determined. There is no free will. Unless you go into Samadhi. Samadhi is emptiness. And when you operate from that emptiness, then you're operating freely. You understand what I'm saying? When we are conditioned
conditioned, in spite of so many lessons and understanding that college is bullshit, it is making us into puppets, but we still want to go back to it because we're scared. When we know that our parents have made mistakes by guiding us in this or that direction, but they have invested in that education, so we have to finish it. So we have to make another mistake because our parents made a mistake. We have to go forward with carrying on with their mistake, and then we'll continue the same thing with our children. You understand? So you said I could think. Makes me feel like you know that many others cannot. Correct? Yeah. That's true. So when people are thinking and speaking, what are they really doing? Are they even thinking? No, they're just repeating someone else's thoughts. Absolutely. I want to know that how is it that if you know that they're repeating someone else's thought, why are you listening to their thoughts? If you know they're not coming from a place of originality or thought in the first place, it takes energy, it takes tapasya to have a great thought. Somebody who's not, like for example, I don't think Anushka is doing tapasya, I don't think this guy is doing tapasya. Neither I'm doing tapasya. Yeah, right. So, and that's why if you read about just that one call was enough, but if you have to, you will see throughout creativity and originality in nearly everything I've done so far in my life, 14 years, only that you will see. I'm opening, I'm not alone. I'm not the only one who can think. There are many people in the world who can think. How is it that you guys have not found somebody to lead you who can think? I have. You have who? Tell me, name them. So there is a person called Sharad Chandra. Sharad. Aganu Sharad Chandra Sagar. He is from Bangalore. That guy is terrific. That is someone who can think. There's another person, TH. This one is TH. Okay. No. This Sharad is TH. SHARATH. Oh, Sharad. Sharad, yes. Got it. Now there is another person called Sharad. Sharad, okay. With a D. Okay. This guy can also think. This guy can also process things. And Do you think I would say the same for the two? I would also acknowledge that they can think? Or you think you're not sure if I would say so too? yeah, actually, age becomes a thing here. How old is he? So the Sharad D, he's around 40. Sharad, he's 27, 28. Okay. So I don't think you will say the same for 27 one, but of course For him I would say so. And who's the third one? No, I think These two people. Then this may be true. Had you given me a few more names, I would have said that no. Then I think even these are. That's what happens when we add noise. The essence also gets diluted. Okay. You know. That's why Steve Jobs came to Apple. He cut all other projects and said, "We are our personal computing company. That's it. We are not going to be making printer or calculator. We won't become HP." So it's very, very important to cut down on the bullshit. Yes. And just so now these people have more, like it's like, you know, that's what mind is. If you keep filling mind with shit, you will forget even these two. Imagine if this whiteboard had 100 more names, because you would have said 100 more people I know would think. Then these guys would have had no mention. Yeah. So let me take the liberty to be exactly the way I am. I take that liberty always. I don't know what are formalities. Today is my birthday. I'm not. Thank you. And I did not know, I mean, it's been a long time I haven't celebrated my birthday, and the reason is not that because I don't like celebrations. If you look at my Instagram, you will know how much I celebrate, how much I party, but nothing over mission. If I am in the mode of mission, if I know that there are some deadlines to be completed, to be met, and I know that I have done almost 15, 18 years of unwavered, or let's say from the day I was expelled from school, from then on to today, I have stood my ground. For me, as always, and will continue to be, I am right and the other is wrong. To have that understanding about one's righteousness, one must be right. Otherwise, they're going to destroy themselves in that approach to life where they think they are right and the other is wrong. But it turned out I was right and the other was wrong, because all others who questioned my conduct are suffering from diseases I'm not. You know, by the time I'm going to be nearly 40, and you can see the other 40s, and then you see me, and then see those other 40s again, and then this is sometimes my answer to all of them, all of those people, that what I save myself
from was the kind of aging that you guys have on yourself. I don't have that aging. So that is my answer for whether I was right or wrong on the day I was expelled from school. But of course I know, I was right. I was the one who was debating. I was the one who was questioning. Obviously teachers are not going to like that. So, because I'm a thinking man, I would take the liberty to say that I don't know how it has been for you here so far, but I know there's an air of softness, you know. There's an air of softness. Everyone is very soft with each other. But why is that when we look at football coaches, we don't see them soft? Why is it that when we look at coaches and administrators or commanders, we don't see them soft? Then what the fuck is softness going to get us? You know? Of course, some polite conversation gets us some brownie points. You know, people are going to like us if we are soft, right? But neither are people going to make progress, nor are we going to make progress. So, the first shift that I want, you see, in spite of, I can look at her and I can feel that she does not have that courage to tell the other person, sir, enough. These strategies of mindlessly creating YouTube channels and mindlessly creating Instagram accounts and mindlessly creating Facebook accounts, mindlessly creating LinkedIn is just going to waste so many energies and get nothing. But she is still not told him. And he's telling her to create YouTube accounts of all these other brands. But she didn't dare to ask him what is the strategy for it. What kind of content is going to go in this one and not this one? And this one and not this one. And who anyway thinks about having 10 YouTube channels? एक ही चला लो बहुत होता है. But इसने बोला नहीं, अभी एक जानती है कि ये मेरे से agree कर रही है. But she didn't say that in the room. That's why I called her. This is the real reason. She has to leave. I just want to tell her that if she continues to be this person, you know, I'm looking at you and telling you because she'll be gone. You are in. So from here on, I don't know how you are with others, but be with me like an equal. Tell me if I'm saying something and you don't agree with that strategy. Don't just listen to me because I said it. I want to change this culture in this organization too. Here everyone is just, there is nobody who questions. Everyone is like, yes sir. You walk in the room, you say yes sir, and they'll come back with the shittiest of works. And the outcome is in front of us. I'm not seeing any real progress made at the ends of interns. Have you known this? Yeah. This organization is bigger than I am. If this organization wants, from tomorrow, I wouldn't be inside this office. But still I have the balls to say it on camera. And I have the balls for it to go to everyone who runs this organization. You know, that's what I mean. You get it, Sanskar? So when working with me, be like a man. That's my first rule, right? Work like a man. I don't want softies around. I want people who can change the world by their action, by their voice, by their gut. I want people who are ready to take punches. Because that's when we create great boxers who can go in the ring and fight. And if we are questioning the dogmas and the wronging the world, then we will have to fight. Yeah. So I'm hoping that you're ready to fight if need be. And fight in my life means intellectual fight, not violent fight, but I am not averse to violence. If violence is initiated from the other end, then there is no problem. So I'm saying go all in. If we don't be like that, we will be played like puppets. And that's why everyone is played like puppets. They go to colleges, sit in front of the professors, they come out of the class and bitch about the same professor. But I'm not saying professor is such teacher-worthy being that you should worship him. Of course, he deserves that abuse that you have for him. You know, I'm saying it to the students of the world. He deserves it for his uninspiring conduct, uninspiring, non-creative, loser-like life. That because he couldn't be anything else, he decided to come to college and teach. Because he's a loser, he comes to college. So teachers are those who were losers in their dreams. Most of the time it is that.
obviously students are going to be mere puppets in that classroom because nobody wants to be in the classroom of teachers that are not inspiring at all, that are just opening the book and repeating. Then why do I need the teacher? And students who are just listening and making exact notes of the words spoken. Is that correct? But we still sit in those colleges. If we are of that conduct, we will not be doing what I'm here to do. So I'm hoping you are of not that conduct, you know. And I'm only relying on just one fact. See, the right outcome of the right tapasya that you've begun, that landed you. Do you have any guru? No, I don't have any. Good. So your tapasya, your self-tapasya, your own curiosity landed you to, this is your first reward of even knowing this. The first reward is that without telling me who you are, without telling me anything about your past works, without telling me anything about your degree, I appreciate you over and above almost every intern I have met until today in this office. You may be the best intern, in fact, in my view. At least you are touching this topic, you know, which is a more relevant topic than anything else interns are doing in their colleges or here. If you know this, there is potential. There is potential in you to understand the reality, truth, and right strategy. Because everything that is happening in the name of our mother brand, onlystartups.com, in which we are creating several brands, is really just hit and try, hit and try, hit and try. It's like nobody has a mind to think what is the right strategy to do. Like when I decided to be the guy who could, the word I used in 2011 was the go-to guy to entrepreneurs. Just this. Little did I know that I would be genuine about being the go-to guy to entrepreneurs, so one day some of them would start looking at me as their teacher. This is the right strategy. The right strategy is always truth. You get it? Yeah. So if we are showing fake stuff, you look at something and you know it's fake. If you look at it deeply and sincerely, you know, okay. You know, oftentimes when even our government, you could be so fond of and mesmerized by the leader, but you look carefully and you know when he's lying. Those are not right strategies. They may get them victory now, maybe a few more years, but it will be the cause of maybe that damage that lie will always make. So the right strategy is a strategy of truth. So what is the right strategy in creating the YouTube channel of even this? Where is the right strategy in creating a YouTube channel of Quintet? या बताइए, आप लोगों की लोन की ब्रोकरिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इसका यूट्यूब चैनल भी बना दो, और आप बना रही हैं. आप क्यों बना रही हैं? सर्टिफिकेट मिलना है इसलिए ना, सच बोलना मुझे. No sir, actually Hari sir called me and just texted me. He said कि make sure कि आप बना दो. तो तुमने पूछा सर क्विकटेट में हम ब्रोकरिंग कर रहे हैं, इसमें क्या लोगों को वीडियोस दिखा के क्या उनके यूजफुल टाइम को बेकार करने की मूड में है क्या? पब्लिक बेकार है क्या? पब्लिक यूजलेस है क्या? वहाँ पे वो वैसी वेस्ट हो रही है, बेकार टाइप का मीडिया देख रहे हैं इंटरनेट पे, और हम और बेकार मीडिया डालने की कोशिश कर रहे हैं. I wanted to, but he's in a meeting. You wanted to, you are saying that only because you have met me so far. Otherwise तुम इतना भी एफर्ट नहीं करती कि तुम कुछ बोलो भी. तुम सिर्फ सुनती हो, बोलती नहीं हो. Anyway, so यार सबसे पहले हमें ये करना है. मेरा वजन इतना है कि मैं एक बार बोल दूंगा तो चीज एकदम वैसे ही होगी. लेकिन क्या मैं अकेले सब कुछ कर जाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ? अकेले तो नहीं कर पाऊंगा. अभी तुम्हें पता भी नहीं है मैं क्या करना चाहता हूँ. लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हें पूरे देश में किसी को भी देख लेना तो फिर किसी के अंदर ये बल नहीं दिखेगा. जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हें डिस्प्ले पे मिलेगा इंटरनेट पे. तो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा. मुझे थोड़े आदमी जैसे लोग चाहिए जिनको सही और गलत में थोड़ी समझ है, और जो चीज सही है वो सही करने के लिए आए हैं, वो गलत करने के लिए नहीं आए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेट का भी यूट्यूब चैनल बन रहा है, इसका टाइम फालतू है क्या? अब इसमें हरी की कोई गलती नहीं है. हरी को खुद ही पता है कि सब घोड़े गधे रखे हुए हैं इंटर्न्स के नाम पे, तो हरी घोड़े गधों से तो घोड़े गधों वाला काम कराया जाएगा.
है ना, इंटेलिजेंट इंसान से इंटेलिजेंट काम कराया जाता है। तो मैं कॉलेज का ड्रॉप आउट हूँ और तब से लेकर आज तक मुझे कभी किसी ने नॉन इंटेलिजेंट काम देने की हिम्मत भी नहीं किया है। जो मेरा पहला कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप जैसा तो मैं वर्ड ही कभी यूज नहीं किया मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। पहला कॉलेज के दौरान जब मुझे किसी ने ऑफर दिया 2007 में 35 हाईएस्ट ऑफर 35,000 रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में मुझे मिला। और जिन लोगों ने ऑफर दिया कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा लिटिल आइंस्टाइन। पहली बार मुझे लाइफ में किसी ने बोला, बट बड़ी सोच के लोग तो देख पा रहे थे मेरा पोटेंशियल क्या है। तो शायद ये रहा होगा कारण कि किसी ने मुझे कोई आलतू फालतू घोड़े गधे जैसा काम नहीं दिया। मैंने आज तक ऐसी झाटू टाइप के टास्क नहीं किया अपनी लाइफ में, और ना मैं कभी करूंगा। मेरा एक बार किसी को मैसेज ही काफी वो करेंगे, तो हरी ने भी बिल्कुल वही किया। उसने कहा ये सबसे झाटू काम जो है मैं सारे घोड़े गधों को दूंगा, ना खुद करूंगा, ना संस्कार को दूंगा, ना मनु को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। जो सबसे बेकार लोग हैं उनको दूंगा। शायद ये कारण होगा अनुष्का, यू नो, मे बी, यू नो, it's on you, it's not on Hari. It's what you have shown in your internship. But you are lucky. You are lucky that you are even listening to me. It can change your life from here on. But look at the other herd that we have around. They had the opportunity. I don't know anything, but I can guarantee that behind my back, maybe they mock. Okay, then that's great. But that's what I've experienced in life. You know, when you cannot talk to somebody in person, then you go behind the back and then talk. And when you talk behind the back, it's mostly not that good. I'm hoping it is. So they will one day come to these videos and learn what they couldn't learn is for them. Otherwise, if I don't record it, they won't understand कि क्या घोड़ा गधा मजदूरी कर रहे हैं वो लोग। इसलिए थोड़ी पढ़ाते माँ बाप की गधे बन जाओ। तो इस कोर्स को करेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई मेरी टीम में है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको मुर्गा बनाया था वहां पे, अगर कोई मेरी टीम में है तो उसको मैं मुर्गा भी बना दूं तब भी उसको मैं ही ऊंचे आवाज में बोलूंगा और कोई नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरा जो गुरुत्वाकर्षण है वो ये काबिलियत दे रहा है कि मैं थप्पड़ भी मार दूंगा, अगले बंदे को पता है कि गलती उसी की है। तो मैं बड़ा अलग किस्म का हूँ। मुझे आइडियली तो कमांडर होना चाहिए था आर्मी में, बट मैं अगर आर्मी में कमांडर होता तो फिर मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर पाता। जो मेरी रेंज, शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता अपनी लाइफ में अगर मैं आर्मी में कमांड कर रहा होता। यहाँ पहुँचने में सब छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और फिर ये मिलता है, फिर वापस आने का मन करता है, क्योंकि तभी समझ में आया था कि अद्वैत और द्वैत दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अद्वैत को ढूंढने जो लोग गए, जिन्होंने मान लिया कि यही है सब कुछ, वो अपने जीवन में कभी खुशी नहीं प्राप्त कर पाए। वो पहाड़ों में बैठे हुए हैं उदास साधु संत के भेष में, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, और वो जब बात करेंगे तो उनके अंदर की बिटरनेस महसूस होगी। वो दूसरों को गालियां सुना रहे होंगे, कहेंगे अंग्रेज ऐसे, वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसी पिक्चरें चल रही हैं, ये हो रहा है, मुसलमान वो कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ हिस्टोरिकल बकवास बोलने के लिए है, अपना फ्रस्ट्रेशन झलकाने के लिए है, लेकिन ज्ञान देने के लिए नहीं है। वो बता नहीं पाएंगे भगवान क्या है, लेकिन ऐसा कभी कहा नहीं गया कि भगवान समझ नहीं सकते या मन को समझ नहीं सकते। बट ये लोग कहेंगे हमेशा, अरे ये तो अनुभव की चीज है, ये कोई बता नहीं सकता, ये तो अनुभव की चीज है। बस बच गए, करेक्ट चाहिए बोलने का कि अनुभव की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज के बियॉन्ड है, ये ना अनुभव की चीज है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझा जा सकता है। समाधि का कोई अनुभव ही नहीं है, अद्वैत का कोई अनुभव ही नहीं है, द्वैत चाहिए अनुभव के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? कैसे कोई कह सकता है कि ये अनुभव की चीज है? यहीं पे मैं, इसीलिए तो मैं पहाड़ों से 5 साल पहाड़ में था, वापस आ गया, मैं समझ गया यहाँ पे वही चुतियापा चल रहा है जो नीचे चल रहा है। डॉगमा हर जगह मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, और स्पेशली अगर इन्वेस्टर्स के पैसे पे चीजें चलती है ना तो बहुत ज्यादा डॉगमा में आता है। सिर्फ करो करो, अपना जेब से पैसा लिया करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो नेचुरली अभी तक अब तुम्हारे पे आते हैं, तुमने भी किसी टॉपिक पे काम किया, रिजल्ट वहां भी नहीं निकल के आया। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी वजह से नहीं निकला, मैं कह रहा हूँ यही होगा अगर इसको बिल्कुल आयरन फिस्ट की तरह बदला नहीं।
हम जिसके पास काम करने के लिए जाते हैं, हमारा कर्तव्य ये है कि हम सही काम करके चीज़ सही करें, भले ही हमें निकाल दिया जाए, तब हम हमेशा बेहतर जगहों पे पहुंचेंगे। लोग, जब मुझे स्कूल से निकाला गया तो मैं और बेहतर स्कूल में गया, फिर मैं बिरला स्कूल रानी के बोर्डिंग स्कूल में गया, और बोर्डिंग स्कूल के जैसे इंडिया के टॉप पब्लिक स्कूल्स के बीच में मुझे मौका मिला भाषण देने का, एक्टिंग करने का, म्यूजिक करने का, स्पोर्ट्स खेलने का। तो मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, लेकिन जिस दिन मुझे निकाला गया था उस दिन मैं घर भी छोड़ के भाग गया था, क्योंकि मुझे पता था पिटाई होने वाली है अब घर में कस के। तो उसका आउटकम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन लाइफ में नाम भी बहुत, पूरे लखनऊ में सारे स्कूल्स में नाम हो गया मेरा। कभी इससे पहले हुआ ही नहीं था हमारे स्कूल में कि किसी को सस्पेंड भी किया हो, मुझे सस्पेंड भी किया था 1 साल पहले, फिर एक्सपेल कर दिया, मैं तो हीरो बन गया। बदमाश बच्चे तो पसंद है ना सबको, सारे बच्चों को भी पसंद है, लड़कियों को भी पसंद है, सबको पसंद है, फिर इसके अंदर कोई कैरेक्टर है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था जो भी हुआ। तो थोड़ा सा हट करना पड़ता है, हट, यू अंडरस्टैंड? हट योगा को हट योगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हट करते हैं कि 100 सूर्य नमस्कार करे बगैर हटेंगे नहीं, तो ये होता है हट, जिद। तो जिद करवाने का योगा हट योगा है कि अपने शरीर से में जिद भर लो और करके दिखाओ उस चीज को, वो काबिलियत बढ़ाता है एकाग्रता की तरफ पहुंचने का, क्योंकि इन सब चीजों में लगता है एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है सोचने में, थिंकिंग कर ही नहीं पाते हैं लोग। तो मैंने आज ऑब्जर्व किया कि मैंने इसको कहा, ये क्या बताऊं मैं इसको मैंने आई थिंक जितना इसको, ये भी सोच रहा हूँ कि यार ये तो इतने कड़क आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा ही है। मैंने जितने थप्पड़ इसको लगाए पूरी लाइफ में टोटल किसी को नहीं लगाए होंगे, मतलब टोटल अपनी लाइफ में इतने थप्पड़ नहीं चलाए होंगे। तो उसके बाद भी ये यहाँ पे है, पर मुझे इस वक्त लग रहा है ही इज नॉट वर्दी ऑफ इट, ही डजंट डिजर्व इट। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है ही डजंट डिजर्व इट बिकॉज he made a video today in which I am saying something. When you hear it, you know that यार ये बंदा तो रिस्क ले रहा है बोल के, क्योंकि ये तो बहुत ही लॉफ्टी बात बोल रहा है, ये तो चैलेंज कर रहा है दुनिया के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को, रिलीजियस लीडर्स को, दुनिया के सारे स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स को। कह रहा है कि जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हमसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। और मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ कि सत्यता के ऊपर दुनिया में कोई एक्सेलरेटर हमसे बेहतर नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने ये जो बोला उसका ट्रुथ ये है कि मैं अपने आप को ये चैलेंज देता हूँ हमेशा कि मुझे हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंच जाऊं। हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंचने वाला जो चैलेंज है वो मुझे वहां तक लेके जाता है, तो मैं ये चैलेंज देता हूँ अपने आप को। और लेकिन मैंने भावनाओं में बह के इतनी बड़ी बात बोल दी कैमरे पे, तो सच क्या है? सच ये कि मैंने कुछ बोला, और ये भी सच है कि मैंने भावनाओं में बह के ये बोला। अब मैं जब उसको पोस्ट करूंगा तो मैं कहूँगा ये बात साफ कि भावनाओं में बह के बोल दिया, और इसके आगे कोई कहानी ऐसी रच दूंगा कि कॉन्टेक्स्ट सही हो जाएगा। समझ रहे हो? ये है क्रिएटिविटी, करेक्ट? एनीवे, अभी ये सारी बातें किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मोबाइल में मैं टाइप कर दूंगा, किसी को टाइप करने की जरूरत है मैं खुद ही कर देता हूँ। पोस्ट होते ही मैं एडिट पे जाऊँगा और टाइप कर दूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वीडियो किसी को भेजा और मैंने कहा कि ये वीडियो एकदम सही है, अभी मैं नीचे बोल भी दूंगा कि भावनाओं में बह गया, पर आजमा के देख लीजिए, कुछ इस तरह की बातें, तो खेल जाऊंगा वहाँ पे। और पहले से ये खेला हुआ है, मैंने कहा है कि मैं कीड़ा मकोड़ा जैसा हूँ, 700 बिलियन लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, आप लोग ढंग से अपने आप को पाने समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे आप भी कीड़े मकोड़े हैं। तो एम्बैरस करने में खुद को मुझे कोई शर्म नहीं है। जिन लोगों के सामने एम्बैरस करूंगा वो मुझे कुछ दे नहीं रहे वैसे भी, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो वीडियो के एंड पे मैंने सोचा गो स्टार्ट का लॉन्च का मेरा पहला ही वर्ड होगा, अबाउट गो स्टार्ट इन पब्लिक। तो मैं उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा और गो स्टार्ट का लोगो लगाया। उसको रीड करने के लिए 5 सेकंड्स चाहिए, तो रील के अंदर इतनी स्पेस थी कि 5 सेकंड के लिए वो स्टिल इमेज आती है एंड पे। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? रील खत्म हुई और एंड पे इस बंदे ने 2 सेकंड दिया उसको पढ़ने के लिए। मैंने इसे 5 बार पढ़वाया, 5 बार पूरा नहीं पढ़ पाया,
पूरा पढ़ने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं पढ़ पाया, रील खत्म हो गई। फिर मैंने कहा फिर पढ़, फिर से पढ़ने की कोशिश की, फिर नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा क्या ये जनता मूर्ख है? जनता वहां पे आएगी कुछ पाने के लिए, उसके बाद जनता देखेगी रील खत्म हो गई, हम पढ़ नहीं पाए क्या लिखा था सर ने। तो मैं कम से कम पिछले 1 साल से, जब से बनारस में मुझसे मिला है, तब से मैं इसको ये बता रहा हूँ कि एम्पैथाइज विद योर ऑडियंस। कभी भी कोई भी ऐसे YouTube चैनल कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं लॉन्च कर रहा होगा जो ऑडियंस के साथ एम्पैथाइज करना जानता है। आदमी का समय फालतू नहीं है कि हम कुछ भी फालतू देते रहे उसे, कि हमारी गाड़ी चलती रहे तो हम फालतू उसको वेस्ट करते रहे उसका समय। तो जनता आ रही है गो स्टार्ट के पेज पे, उसको कुछ मिल नहीं रहा है वहां पे। मिल सकता था, ये वीडियो मिल सकता था, कुछ जानने को मिलता, कुछ सीखने को मिलता, शायद इतना ही समझ में आ जाता कि अगर ये प्राप्त कर ले तो शायद अगले सर्स जो मिलेंगे लाइफ में, बॉसेस जो मिलेंगे, कप्तान जो मिलेंगे, वो कहेंगे हटाओ डिग्री, तुमने सबसे बड़ी डिग्री पाने की राह पे निकल लिए हो, और तुम्हारी डिग्री और रिज्यूमे की जरूरत नहीं है, आओ यू आर इन। जितना सैलरी मांग रहे थे उससे 10% ज्यादा देंगे तुम्हें, इस बात का रिवॉर्ड। कि कम से कम शुद्धता की तरफ बढ़े तो, पवित्रता की तरफ बढ़े तो। ये होने वाला है लाइफ में। जो बच्चे वीडियो सुनेंगे उनको समझ में आएगी बात, और जिनके वीडियोस में दिखेगा, जिनके रेज्यूमे में दिखेगा MBA, मेरे जैसा आदमी सबसे पहले उस रेज्यूमे को फेंकेंगे, कहेंगे हटाओ, यहाँ पे ना करेज मिलना है, यहाँ क्रिएटिविटी मिलना है। You understand what I'm saying? Do you agree with me? So why don't we show the real to the world outside through these videos? Anyway, I've been doing this for a long time, but one needs this oratory capability and courage or spontaneity to be able to orate the way I do. Maybe others don't have it, so they can't do it, they can't pull it off. But how blind are they? That they know I'm available with over 400 videos on internet. How blind are they that nobody proposed by themselves, except of course the genius, the other one is Dr. Irfan. Except him, there is not even one person who understood that we have found the face, the brand ambassador, the Shah Rukh Khan of a brand is right here. We have to now start showing the real. GoStart is riding on my shoulder. OnlyStartups.com is riding on my shoulder. IIDB QA, Mentor Hub, they're riding on my shoulder, and I'm sitting on Dr. Irfan's shoulder, so I'm riding on his shoulder. So this is a lot of weight, and this weight cannot be conveyed by just some silly quote photos. This weight will be conveyed only through these videos. Yeah. But nobody had the ability to recognize this, even though her behavioral psychology expressed to her that there's something different about this man. But still she didn't come up to me and say, sir, something different about you. Maybe on camera also people will feel so. Why don't we shoot you? You speak quite well. You make sense. Why don't we shoot you and make those reels as a part of her? You know why she didn't? Because she herself doesn't know. She is not giving herself space enough to think creatively to get outcome. So here I come to the next point, that we don't work together, you and I, if you are not working for outcome. I am strictly, as always, from the beginning of my career, when I dropped out of college, I had raised $100,000 in investment before there was Flipkart or Ola, before anyone you know started speaking the language of startup in India. And then I hired 8 people from IT Delhi. Ideally, they would have been taken in as interns. I never in my life used the word intern. Because what is intern telling me? This word is telling me that your age is telling me that you can't be a high level executive. Just because you are in college second year and you're only 19 years old, you are only worthy of being an intern. You understand what I'm saying? Another lie. You know? Not you. The lie of society. This word is such an exploitative word. You put this word and you know you don't have to pay more than this. Yeah, right. So you are coming to somebody called Nishchal, or you may say an explosion of, can you fill this blank? Nishchal is an explosion of Creativity. Okay. Can you fill this blank, Anushka? Knowledge. Can you fill the blank, Manu? Truth. So let's go with this for now. Explosion of truth, because I just dropped another truth here, which would be unwelcome. You know, but that's what we want.
वी वांट टू गिव द ट्रूथ लाइक औषधि, थोड़ा कड़वा लगना चाहिए, औषधि कड़वी होती है, हील करती है, लेकिन तो जाने दो सारे बिजनेस एम्पायर्स में इस मैसेज को कि कोई भी स्टूडेंट को इंटर्न बोल के हायर ना किया जाए। मैं ये कल्चर बदलाव लेके आना चाहता हूँ। आपने इंटर्न बोल दिया तो आपने डिफाइन कर दिया कि आपको आउटकम चाहिए ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो? यूथ के लिए समझ पा रहे हो? पक्का? कल डॉक्टर इरफान ने बोला एग्जैक्टली वही जो उन्होंने पहले दिन से बोलते आ रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन जब तक कि हम इस आयरन फिस्ट के साथ जो वो बोल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं करेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। वो खुद ही बता देंगे। लेकिन सारी चीज बॉइल कर गई है राइट स्ट्रैटेजी के वजह से, जो मुझे बहुत पहले पता था। तुम उनको जानते हो आचार्य प्रशांत? तो आचार्य प्रशांत 8 इयर्स तक उनके YouTube में 2000 सब्सक्राइबर्स थे। कितना प्रचंड ज्ञानी आदमी, करेजियस आदमी, बहुत ज्यादा करेज, छोटा मोटा नहीं, IIM शायद, IIT, IAS, पता नहीं क्या क्या है उनके पास। उसके बाद सब छोड़ के आटू झाटू यूथ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी गए। तो 8 साल उन्होंने दिया 2000 सब्सक्राइबर्स पे बैठ के। बट ये होता है तरीका, जब पौधा सॉइल में डालते हैं तो तुरंत आउटपुट नहीं चाहिए होता है, फ्रूट आने में टाइम लगेगा और तभी फ्रूट आएगा। और स्टेरॉइड्स मार के अपने आप को पॉइजन देने वाले हो। तो ये चल रहा है यहाँ पे, सो इंटर्न्स के थ्रू तो सबसे पहली चीज जो हमें बदलनी है वो है आउटकम। तो अभी हम काम करना शुरू करेंगे तो आउटकम की तरफ जाएंगे। अगर आउटकम के बारे में सोचोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि नहीं यार, ये चाहे निश्चल सर बोले, हरी सर बोले या डॉक्टर इरफान सर बोले, ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, अपन नहीं कर पाएगा ये स्ट्रैटेजी। अपन सबसे पहले उनको प्रूफ देगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो बैठेंगे शांति से, आंख बंद करके ध्यान में, और ध्यान में बैठ के सोचेंगे कि क्यों हमें लग रहा है ये नहीं वर्क करेगा। और तब तक सोचते रहेंगे तब तक जवाब नहीं ले आएंगे, क्योंकि बहस होनी चाहिए। अगर बहस नहीं है, अगर डिबेट नहीं हो रही है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब तुम मेरे साथ काम करोगे और इस अंदाज में काम करोगे। अगर ये अंदाज चाहिए तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये समझ लेना कि अब एक भी सोशल मीडिया एक्टिविटी गो स्टार्ट के अलावा नहीं चलेगी। गो स्टार्ट हमारा एग्जैक्टली वही काम करेगा जो गो स्टार्ट क्या एक्चुअली में, असली में तो फेस काम करता है। वो फेस चाहे ट्विटर पे हो जाए, चाहे फेसबुक पे हो जाए, चाहे यूट्यूब पे हो जाए, चाहे इंस्टा पे हो जाए, चाहे सब पे हो एक साथ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इलॉन मस्क तो सिर्फ ट्विटर पे बैठा हुआ है, बट उसको पता था कि अगर मैं पर्सनल ब्रांड अपना बना लूंगा तो मैं जो बनाऊंगा सब लॉन्च हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी ये पता था, मोदी को भी ये पता था, पूरे आरएसएस को ये पता था। मोदी के चेहरा ही लगा दिया सबके फेस के ऊपर कैंपेन में। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रही है बात, नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ किसी को कोई केंद्र तो भी नहीं समझ पा रहा है। ये भी समझ रहे हैं लेकिन केंद्र नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया अपने सर पे नहीं ली हुई है और लेनी भी नहीं है इनको। इनका जो काम था इन्होंने 5 स्टार लेवल पे किया है। जो टीम में बाकी लोगों को क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया काम इनका नहीं है। इनके पास विजन है ना, तो ये विजन देख पाते हैं, इसीलिए हमारे निश्चल को बुलाया है। इसीलिए 91 स्प्रिंग बोर्ड इंडिया की लार्जेस्ट कोवर्किंग स्पेस में मुझे को फाउंडर को ऑफर दिया था, क्योंकि सब देख पा रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो खुद भी देख लोगे। सही गहरे लोग पूछेंगे यार तुम बीजेपी में क्यों नहीं चले आते, रूलिंग पार्टी है, तुम्हारे जैसा वक्ता तो चाहिए हर किसी को। और बात कर रहे हो अद्वैत की, सनातन धर्म से जुड़ी हुई बात, क्यों नहीं जाते उनके पास? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर मैं चला जाऊंगा तो। उनके पास कौन सा ट्रुथ है? करेक्ट, उनके पास तो बस हमें सब पता है क्या है उनके पास, अपॉर्चुनिज्म। करेक्ट। तो
उनकी अगर मुझे मंच दे दिया उन लोगों ने तो उनकी खुद की दुकान बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली वही जो ओशो के साथ, वो उनका बोलने का मतलब बाकियों की दुकान बंद होना, वो हो ही रही थी तो कंट्रीज ने बैन कर दिया उन्हें, बट आदमी वैसा होना चाहिए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री विल। So I am saying that free will is not in humans except humans that understand this space, who get established in this space which is zero, nothing is not there, and that's why atheism, not because भगवान नहीं है या भगवान है, इसलिए कि जो है वो शून्यता है, एम्प्टीनेस, इट्स नॉट मैटर। तो अब मैटर को जो है ही नहीं उसको कुछ क्वालिटी दी जा सकती है, जैसे है ब्लैक और नहीं है वाइट। तो नहीं है और है या जीरो और वन, ये दोनों एक दूसरे के बिना तो मीनिंग नहीं पा पाते। तो अगर मैं जो है मैटर उसको मीनिंग दे रहा हूं तो मैं नहीं है को मीनिंग क्यों नहीं दे सकता? अगर यहां तक पहुंच गए तो हम कहेंगे भगवान है, पर नहीं है की स्थिति भगवानियत है। गॉडलीनेस मीन्स स्पेस, दैट्स ऑल। वैक्यूम इज गॉडलीनेस। सो imagine if the goals of Osho of giving wisdom or healing through truth was made into a classroom with books of other authors and some teachers from outside coming and giving lectures. But of course Osho would have been the captain of the ship. So now the captain of the ship is sitting in closed rooms having great discussions, but classrooms are recorded when teachers are talking, when books are being displayed, and maybe some photographs of some good pages of the books are being sent. I don't think it would have had the same impact as the real face had in the world. Right. So nothing compares to, if this is found, no strategy in social media is going to be comparable to this. Now we can do one thing. We can get to make one brand, the Musk, and from here everything gets launched. Whether he does a torch fire throwing gun or sell some vodka bottles, he just has to make a tweet. And highest number of, how is this not clear to this team? They are talking about creating so many pages while this guy killed all his pages. Just look at where we are going, with the strategies that are going on. That's why the social media has no impact. Forget impact, it doesn't even have the content. So we have to correct that. So what I'm saying is that from here on, I am looking for somebody who is not looking at the byproducts anymore. The byproduct is Instagram, the byproduct is YouTube, the byproduct is LinkedIn. What do you think is the main product? Content. Yeah. So I want somebody who says no to shit. Okay? And if you are that, then we have done our first level correct. Once the content is accepted, because the content's outcome that we are looking for is the social movement. कोई लालागिरी करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, सोशल मूवमेंट क्रिएट करना है। वो जो लोग जीवन में मूवमेंट क्रिएट करके गए हैं, वो यही स्कीम थी उनकी भी। मेरे पास जो ब्लड दौड़ रहा है वैसे ब्लड उनका भी था। वो लोग सोशल मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब तक हम ये पूरी अपने अंदर विश्वास नहीं कर लेंगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने तो विश्वास किया हुआ है,
तो हम ऐसे वक्ता बन गए हैं। ये विश्वास करने का आउटपुट है। इतना ही काफी है कि विश्वास कर लिया कि हम ये सोशल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। ये सोशल मूवमेंट गो स्टार्ट के थ्रू क्रिएट होगा। तो गो स्टार्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर गो स्टार्ट ने ढंग से नहीं किया तो 100% मैं अपना वीडियो नहीं दूंगा। तो मैं एग्जैक्टली 1 महीने एक्सेसिबल हूँ। गो स्टार्ट मेरा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं अपने रूल्स का पक्का हूँ। अगर मैंने ठान लिया कि मेरा एक भी वीडियो गो स्टार्ट के सोशल मीडिया में नहीं जाएगा क्योंकि उन सालों को कदर ही नहीं है, तो फिर वो नहीं जाएगा। फिर हमेशा के गो स्टार्ट से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। मेरे पास से नहीं जाएगी, मेरे पास तो प्रीसीड है ही। तो वहाँ पे ही वीडियोस चल रहे हैं, वहीं से ये लोग आ रहे हैं। इनके जैसे थप्पड़ खाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, सेम गलती 10-10 बार करते हैं। ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे मेरे पास, शेरों की लाइन लग जाएगी। पर क्या ये आउटकम चाहिए कि ऑडियंस को रील दे रहे हैं और जो पढ़ाना है वो पढ़ने का स्पेस भी नहीं दे रहे हैं उस रील के अंदर। जो चीज 5 सेकंड में पढ़नी हो 2 सेकंड में खत्म कर दे रहे हैं। कोई रीजन था इसके पीछे? गुड क्वेश्चन। Because I can think of a reason why it could. Yeah, you tell me. Yeah. So कितने सेकंड्स का था एंटायर रील? सॉरी, एंटायर रील कितने सेकंड्स का था? 3 मैक्सिमम 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट्स का। Yeah. तो रील थोड़ी ना है। तब तो आई थिंक 3 मिनट्स का नहीं, उसको भी रील ही बोलते हैं। हाँ, मतलब Instagram में बड़ा कर दिया है। But yeah, the reason that I have it is of no value now. If it was 15-20 seconds का कोई वीडियो, उस पे अगर आपने 2 सेकंड का डाला, then it would make sense, क्योंकि लोगों को पढ़ना है, they will see the reel again. Understand? If they find it effective. And I challenge the founders of any startup accelerator which wants to compete with us on the ground of truthfulness to come up with a question for me that I can't answer. You saw? Yeah. But you couldn't have read the whole thing. I could have read. You read it, right? I read it. And the moment I asked you to read loud, No, it's gone. yeah. So if we are not so precise in content, then we are really not going after outcome. So if people are not getting space, I'm saying about an accelerator, I'm challenging any accelerator that can compete with us on grounds of truth. But before that, I've already sold this message of truth to many, you know. I'm going to show you what kind of message I get on my birthday. This itself is far greater than many people's degrees. I'll show you that. But also on the internet you will see such things written about me. So naturally the concept that is non-duality is equal to truth is very well established in my oratory, my narrative, my content. So truth तो मैंने पहले बता दिया, सबसे ऊंची चीज है, सत्यमेव जयते। अब बोल रहा हूँ कोई एक्सेलरेटर हमसे ट्रूथ के ग्राउंड पे जीत नहीं पाएगा, मतलब हम नंबर 1 होंगे इस ग्राउंड पे, मैं ये कह रहा हूँ। और पहली बार किसी इतनी लॉफ्टी वर्ड के साथ इंडिया में कोई एक्सेलरेटर आके बोल रहा है कि चाहे वो अद्वैत हो, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का शून्य हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे whether there are waves or particles हो, और चाहे there is anything at all, ये सब कुछ एक illusionary mental simulation है of the cosmic mind। ये सारे टॉपिक्स तुम समझ पा रहे हो ना क्या टॉपिक्स हैं? तो ये टॉपिक मैं गिफ्ट कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें हम सारे बेनिफिशियरीज हैं, ये इंटर्न्स भी बेनिफिशियरीज, इनको अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने इतना बोरिंग कर दिया है, सोशल मीडिया का सीन इतना बोरिंग कर दिया है कि मुझे खुद अफसोस होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। यू नो, ऐसा भारी कंटेंट का आदमी कहाँ आ गया है, घोड़े गधों के बीच में आ गया है। यू नो, तो नेचुरली मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए मैं अपने बर्थडे को एंजॉय भी नहीं कर सकता। यू नो, मैं फेक नहीं हो सकता, मैं अंदर से जैसा मैं बाहर से वैसे दिखने वाला हूँ।
तो लोगों को लगा यहाँ केक वेक कट रहा था, मैंने केक काटा हल्का सा, डॉक्टर इरफान को ऐसे खिलाया, मैंने मुझे खिलाया, इसके मुंह में मैंने गुस्से में रख किया केक और हरी को खिलाया और मैंने कहा थैंक यू एवरीवन प्लीज हैव, मैं चला गया। क्योंकि अपनी ट्राइब बनाने के आया हूँ, यू नो, आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट have the courage to say things as it is, no sugarcoating. That's the kind of tribe that will stand on truth. So, and that is really the tribe that will change the course of the future of India. So I'm here on that mission. So the product is not even for me the content. The product for me is really the mission orientedness. It is my mission orientedness that is creating this content. मेरी मिशन ओरिएंटेडनेस ने मुझे वो एकाग्रता दे दी जिसकी वजह से मैं शून्यता में पहुंच गया। एकाग्रता पे सेटल हुआ लाइफ में मन, संगीत सुन रहे थे आंख बंद करके, एक हो गए। जैसे ही संगीत रुकेगा समाधि में उतर जाएंगे। एक हो के तो देखो एक बार संगीत से, जैसे ही एक हो गए और रुकेगा ना शून्य का अनुभव हो जाएगा उसी वक्त। शून्य का अनुभव कोई अनुभव ना होने की स्थिति है, मतलब एकदम टोटल लाइटनेस महसूस होगी। म्यूजिक का जो एंटांगलमेंट था वो भी खत्म हो जाएगा, सारे एंटांगलमेंट खत्म होने दो एक बार, फिर मजा आएगा, फिर फ्री विल का उत्पादन होगा। उससे पहले सारे पॉकेट्स हैं, पुरानी कंडीशंस के ऊपर रिस्पांस चल रहे हैं हम लोगों के। हम बिना कंडीशन के रिस्पांस दे सकते हैं इन चीज़ों पे, हमारी कंडीशनिंग कोई है ही नहीं। ना मैं हिंदू ना मैं कोई मुसलमान हूँ, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, ये कंडीशनिंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तो इसलिए फ्री विल को एक्सरसाइज कर पाता हूँ तो दिखाई पड़ता है मेरे करियर या मेरी चॉइसेस को इंस्टाग्राम पे वीडियोस में देख के तुम्हें दिखेगा बिल्कुल ऑलमोस्ट नेकेडली मैं बीचेस में घूम रहा हूँ, ऑलमोस्ट नॉट एंटायरली बट to my freedom and the sun. I want whole sun to fall on me, and I'm recording my video, and I'm speaking the whole scripture. Just एक घंटे तक लगातार बोले जा रहा हूँ और एक भी वर्ड रेपिटेटिव नहीं होगा। मैंने खुद नहीं सुने बट लोगों ने मुझे बताया है, तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं कॉलेज वॉलेज ड्रॉप आउट करके। तो अब चल रहे कुछ बचा भी नहीं, अब जाएंगे कहाँ, थप्पड़ भी खाएंगे, अब जाने के लिए कुछ बचा नहीं, घर वालों ने ऐसी गालियाँ सुना दी, ये कौन मिल गया तुम्हें। एनीवे, तो जो आउटकम निकलेगा वो है the future course of India can change, and that is the power of scripture. One scripture is enough to change entire humanity. In 2023 a new scripture is needed, and that scripture I have already laid since 2020. That scripture is very very visible, but that scripture is only for I think 3 people apart from me under this roof, and that scripture is for him, for you, and for Dr. Irfan. There's not even 1/4 person who that scripture is for. So naturally that scripture is for very very special people who are curious enough to handle conversations or to receive conversations from the realm of Advait, you know. And maybe our target audience is such. Our target audience is not these lalas, you know. Our target audience is really people who can create extraordinary companies, extraordinary organizations. So GoStart needs to be that. If GoStart cannot be that, come to our other social media properties, you know. But invest yourself in doing the right kind of social media, not the wrong kind of social media. Then go to TikTok, you know. If you have to do that kind of social media, go there. We can still use the last of YouTube and Instagram and Facebook and LinkedIn for really giving people that which nobody in India can give them. So that is our goal. You get what I'm saying? Yeah. And it can only be done when there is no confusing thoughts. So when you are getting your brief from me, this will reach Hari also. So he will know through this video that even though I don't have the time, yesterday also I was saying, Dr. Irfan, मैं पता नहीं ये responsibility क्यों लेना चाह रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया जो मैंने अपने लिए अभी तक नहीं किया। इतने सारे वीडियोस बना दिए और इसका ऐसे मूर्ख आलसी, तुम्हें बता दूं जवाब क्या है? जवाब है लेथार्जी। जब इस बंदे ने वो बनाया और जब वो मेरा कंटेंट वहाँ पे लास्ट में रखा तो इसको भी दिख रहा था कि पढ़ा नहीं जाता। 3-4 बार मैंने पढ़ाया, इससे पढ़ा भी नहीं गया, फिर संकेत से पढ़ाया, उससे भी नहीं पढ़ा गया। पहले तो भारी बात कह गया, थोड़ा तो वो भी दिमाग में चलेगा, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। म्यूजिक में अगर स्पेस ना हो साइलेंस की नोट्स के बीच में तो क्या होगा वो म्यूजिक? बिल्कुल, तो वो साइलेंस तो देने का। तो यही बच्चे हैं वो जिनको डिजाइन में स्पेसिंग देनी भी ढंग से नहीं आती थी, अलाइनमेंट भी ढंग से नहीं दिखते थे, लेकिन मुझसे मिलने से पहले अपने बारे में पता नहीं क्या समझ रहा था ये चूतिया।
अपने बारे में समझ रहे थे बहुत बड़ा 30 मार्क कहाँ है, और इसका भाई का हीरो था ये। देखो अभी हंस रहा है चूतिया, 18 साल का इसका भाई है, उसको 2 हफ्ते में समझ में आ गया। मैंने इसके भाई के सामने बोला कि तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलती आज मैं सुधार रहा हूँ, तुम इस चूतिया को अपना हीरो समझ रहे थे। तो असलियत सामने आ गई। तो जब असलियत सामने आ गई तो अपनी क्वालिटी समझ में आई। जो हवा में उड़ रहे थे कि हम हीरो हैं, एकदम शक्ल अच्छी है, बहुत सारी लड़कियां अटेंड करती हैं, इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो नेचुरली जब इतना एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलेगा तो फिर इंसान अपने आप को विराट तो समझेगा। लेकिन वो विराट अपने आप को इसलिए समझ रहा है क्योंकि वो कुएं में सबसे झाटू मेंढकों के बीच में है। एक भी उस कुएं के अंदर बढ़िया मेंढक होता तब भी इनको समझ में आती है अपनी असलियत। अभी तो इनको बाहर समुद्र पे ले आया हूँ तो इनको समझ में आ गया कि कुछ औकात नहीं है। तो सबसे पहले ये ह्यूमिलिटी चाहिए मुझे अपने अराउंड लोगों के अंदर, कि वो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, अभी उनके सीखने का टाइम आ रहा है और शायद अगला 6 महीना 1 साल से बहुत लर्निंग में जाएगा। और मुझे होप सिर्फ उन्हीं लोगों से है जिनके अंदर एम्बैरेसमेंट और ईगो समाप्त हो गई हो, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे पनिशमेंट दूंगा तो यहाँ पे भी पनिशमेंट देगा। मुर्गा बनेगा जो उसने शायद लास्ट टाइम मैं खुद 5वीं क्लास में बनाऊंगा, उसके अंदर कभी मुर्गा नहीं बना। और मैंने सोचा कब तक थप्पड़ लगाऊंगा, मुर्गा बनाओ, साले को समझ में आना चाहिए कि सब अभी देखेंगे और सबको पता चल जाएगा ऐसे फिर झाटू आदमी ने कोई झाटू गलती कर दी है, बड़ी गलती करता, चैलेंज वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान मेरा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुतों ने किया है, क्योंकि मैं पूरा राइट दे देता हूँ चीज़ों का कि करो। और जो गलती होगी सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, इतना आपको क्यों है, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मेरा समय नहीं, मैं करूँ क्या, करो। गलती भी कर दोगे तो मेरा फायदा ही होगा, क्योंकि मैं वैसे ही नहीं कर पाता। इतना सारा मेरा कंटेंट है, कम से कम घंटों का दिन, 1 साल लग जाएगा सिर्फ स्टडी करने में मेरे कंटेंट को, तो मैं तो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में लोगों तक पहुँचाने की क्रिया। तो तुम गलत भी कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, मैं तो वैसे ही नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना करने से अच्छा गलत कर दे, तो करें तो। लेकिन तो वो चीज़ बेसिकली अगर करते करते कुछ गलती करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये गलती कर रहे हैं कि हम कुछ दे रहे हैं ऑडियंस को और ऑडियंस के साथ एम्पैथाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी सारी गलतियां लाइफ में होने वाली हैं। जैसे ये कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पता है मैं आज तक ChatGPT यूज़ नहीं किया है, सिर्फ क्योंकि मैं टेक ओरिएंटेड हूँ तो मैं हर चीज़ को जानकारी रखता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को कुछ भेजता हूँ तो मैं ChatGPT पे नहीं लिख रहा होता हूँ, खुद लिख रहा होता हूँ। तो जब भी ईमेल्स आती थी मुझे दिखाई पड़ जाता था तो ChatGPT पे लिखा हुआ है। आउटकम ये है कि जो कम्युनिकेशन की खुद की काबिलियत है वो समाप्त हो चुकी है। इस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को। तो जब मैं ऑब्जर्व करूंगा किसी की एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर एक इंटर्न है, ज़्यादातर लोग नाम लेने से भी कतराते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट इस ट्रूथ को हाइड क्यों करना? उस इंटर्न को कैसे पता चलेगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ? मेरे अंदर तो वो डिज़ायर नहीं है कि मैं उसके बगल में बैठ कर उसको सिखाऊं कुछ, क्योंकि उसके अंदर वो कंडक्ट नहीं है, वो पात्रता नहीं है कि उसको कुछ सिखाया जा सके। लेकिन वो बहुत कुछ सीख सकती थी, उसकी एक ईमेल का पहला सेकंड के ऑब्जर्वेशन में मैं उसको बहुत कुछ सिखा सकता था, लेकिन वो नहीं सीख पाई। उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी ने मुझे एक ईमेल लिखा, उस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ना और मुझे बताना कि इसमें क्या गलती है। और मैंने बोला कि इसमें टाइटल नहीं है, ये किस चीज़ का MOM है? तो उसने मोबाइल फोन के अंदर सब्जेक्ट पूरा दिखेगा और जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का टाइटल पूरा नहीं दिखेगा, राइट? क्योंकि डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, जरा सा दिखेगा बस। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अभी इसको पूरा खोलोगे डॉक्यूमेंट के टाइटल को तो आखिरी में दिख जाएगा एक वर्ड, लेकिन जब मेरे पास 500 ईमेल्स एक दिन में आ रही हैं तो मेरे सब्जेक्ट में और मेरे डॉक्यूमेंट के टाइटल में मुझे मेन कोर फर्स्ट वर्ड सबसे कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए था, करेक्ट? अगर ये चीज़ उसके भाव सीखने वाले होते, एटीट्यूड नहीं होता, वो कहती है सर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है लेकिन मैंने लिखा तो है टाइटल में, पर फिर भी आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने टाइटल नहीं लिखा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी नज़रों में ये चीज़ क्यों आई? मुझे लग रहा है मैंने करेक्ट लिखा है, बट ये नहीं था, उसका क्वेश्चन ही नहीं था, उसने कहा लिखा तो हुआ है। इतनी बारीकी की वजह से मैंने कहा यू डोंट डिजर्व द आंसर, यू नो। But if she had asked me, she would never make that mistake of incorrect subject line. In the entire subject line, my discussion with the startup MOM had no mention of the name of the startup. Now look at the empathy of that person
who knows that so many startups talk to me, so many people talk to me, I'm always seem to be in conversation with somebody or the other. How the fuck am I going to know through the subject and what MOM is this? And through that subject, maybe I label things. Maybe I send it immediately first to the label. You understand what I'm saying, Anushka, right? But what I'm trying to tell you is, not to you. I don't think you are of such bad qualities. I'm telling you leadership. You understand? If you're working with me, you are naturally in a position of leadership because my responsibility is to very quickly transform you into a leader that can lead. See, he came in and he brought in with people with him. So he was the one who decided in Varanasi through a conversation that I was addressing to a lot of people in Varanasi. He decided that I'm his guru. After that, he is with me since that day. He committed to me he'll drop out of college. He did. He went back. Eventually he realized this is a total complete mess. I'm destroying myself, and then he comes back again to me. Now, he doesn't only come back, he is the one who made his younger brother also drop out of college in spite of all the odds he faced from his family. This is his first step towards becoming a leader. Then he brought a guy who is professional on video editing into a little room that was just nothing but a servant quarter in Lucknow where I was living. Now, a room as big as this is all on videos. You can see that room also. The moment you will see that, you will know this is the room I was talking about. इतने से कमरे के अंदर हमारी पैंट्री भी, हमारा टॉयलेट इसके उस साइड होगा और 3 लोग रह रहे थे, जिसमें एक आदमी नहीं रह सकता, उसमें 3 लोग रह रहे थे और केरला से फ्लाई करके आए मेरे साथ रहने के लिए। ये होती है लीडरशिप कि खुद भी आए, और लीड किसको करोगे? ह्यूमन बींग्स को करोगे ना। जब तक तुम्हारे नीचे ह्यूमन बींग्स है तुम लीड नहीं कर रहे हो। और लीडरशिप वो नहीं होती कि पैसा दिया ले आए लौटे को, ये तो खरीद लिया हमने उसको। लीडरशिप क्या होती है? बातों से खरीदना। बिल्कुल, इंस्पायर करना। यू रिप्लेस मनी विद इंस्पिरेशन। तब तुमने कुछ लीडरशिप की, यू नो। मैंने अभी तक सारी लीडरशिप ऐसी की है, तो इसमें थोड़ी लीडरशिप वाली क्वालिटी है। दूर से लोगों को जब दिखता हो तो लग रहा होता है कोई लीडर है, वो स्पिरिट में आ जाता है जब आप नेचुरली वो होते हो। और जब आप पैसा निकाल के लोगों को खरीद रहे हो तो दिख जाएगा झुकी हुई रीढ़। समझ में आ रहा है? सो यार, मुझे ये स्पिरिट चाहिए। मेरी उम्मीद ये है, मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम लोगों की एज का था तब मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं थी जो मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये काबिलियत मौलिक नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं, ये मैटर है, ये मौलिक नहीं है, मौलिक अद्वैत है। तो सिर्फ इस ग्राउंड पर मैं तुम्हें ये बातें कह रहा हूँ। अभी तक ये बात किसी से नहीं की है यहाँ पे, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स से की है। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनसे ये बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, उनके अंदर वो पात्रता नहीं है। किसी को मेरे स्टूडेंट की होने की जरूरत नहीं है अगर वो इस टॉपिक को छू रहे हैं तो, और ना किसी को अद्वैत में डूब जाने की जरूरत है, क्योंकि अद्वैत में डूब जाने वाले लोग सिर्फ अद्वैत ही समझ पा रहे हैं। वो अद्वैत और द्वैत के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो बोल देंगे इस बात को, लेकिन उनके वस्त्रों से समझ में आ जाएगा कि वो भी तो उस डॉगमा का हिस्सा बने हुए हैं। अगर अद्वैत, हाँ, अगर अद्वैत और द्वैत में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो जीन्स और टी शर्ट में क्यों नहीं है, गाड़ियों में क्यों नहीं घूम रहे हैं ओशो की तरह, यू नो, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। बट सब डॉगमा रूढ़िवाद चल रहा है, असलियत नहीं समझ में आ रही किसी को, क्योंकि निराकार का आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है। मटेरियल साइंस के एंड पे है ये बात। मैटर की जब सारी खोज समाप्त होगी उसके बाद ये समझ में आएगा, अगर उस दिशा से जाना है तो, वरना तो दूसरे तरीके हैं। वो दूसरे तरीका का जो आउटकम है वो है समाधि। समाधि पहला स्थिति है उस चीज से जो फायदा मिलता है उसको पाने का, खोल देता है वो उसी वक्त। पहली समाधि ही खोलने की काबिलियत करती है इंसान को पूरा। अगर कभी जीवन में नाचे नहीं थे तो नाचने लग जाओगे, ऐसा खोलता है। किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं उस नाच के लिए। मेरे को नाचते हुए देखना और पूछना फिर, जैसे बहुतों ने मुझे नाचते हुए देखते हुए पूछा कैसे हो रहा है ये, तो मैंने बताया 26 साल तक कभी नहीं हुआ। आज तक, मतलब 26 साल तक मैं कभी नाचा ही नहीं था, मैं नाच ही नहीं सकता था बाकियों की तरह, बाकी लौंडों की तरह कड़क सख्त, ऐसा बना देता है समाज। नाचने के लिए फ्लूइडिटी चाहिए, फेमिनिटी चाहिए, अपने अंदर फीमेल वाली गुणवत्ताएं भी चाहिए।
अगर नाचना है ढंग से, वरना आदमी तो मुक्के मारते हैं, यू नो। असली आदमी मेरे लिए वो है जो नाचना भी जानता है, मुक्का मारना भी जानता है, तब मजा आएगा काम करने में। तो वैसे बनना है। सो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इस टॉपिक को टच कर रहे हो। Advait means the blank slate. If you are that blank, then I will be able to have you unlearn all the wrong lessons that you may have come with. I don't know what those are, but you know it better, and that's why you went into the quest that landed you closer to Advait, non-duality, meaning singularity, meaning you will be able to understand. I'm going to read out something, okay? Maybe I don't need it. No. Maybe I didn't need it. I am already aware, but it was for this moment that I received this from one of the best men I would say even you may have met. Dear Nishchal, as the sun rises on another year of your life, look at the timing first. How considerate. Exactly as 30th June happened, I get this message. Dear Nishchal, as the sun rises on another year of your life, it seems only fitting that we take a moment to celebrate the extraordinary person that you are, your indomitable spirit and your insatiable curiosity for truth and knowledge have not only left a profound impression on me, but they've also helped to shed light on matters of consequence that extend far beyond our immediate circles. Your dedication and commitment to your work, your unwavering curiosity for the truth, and your selfless devotion to providing enlightening content are traits that I find not only admirable but also incredibly inspiring. Your patient journey through the corridors of knowledge, while challenging at times, is a testament to your tenacity and your never-ending quest for enlightenment. On this special day, I reflect on how fortunate I am to know you, to work alongside you, and to be a part of your journey. Despite the different paths we tread, our shared commitment to creating change in the world has bonded us in ways words can't encapsulate. Your dedication to creating an impact, coupled with your ability to engage in conversations on a topic of criminal justice, to startup ecosystems from the metaphysical realm of Shunya to the practices of sustainability from Valley is remarkable. I'm doing it out not to show you the loftiness of the compliments I get, but only this word Shunya. So, Shunya, the singularity. The singularity, the pre-consciousness. सोचो, जब हम ये बातें कर सकते हैं, प्री कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं, तो कॉन्शियसनेस की तो कर ही लेंगे। और फिजिक्स में हाईएस्ट टॉपिक बोला जा रहा है इसको, है भी। उसके बाद जानेंगे कि हाईएस्ट टॉपिक तो शून्य है। ये काबिलियत अगर हमारे अंदर है, तो यही काबिलियत के ऊपर सब कुछ होगा। ये है हमारी बुनियाद, इसके ऊपर ही सब कुछ अब खड़ा होगा। यही बुनियाद को चाइनीज बैम्बू की तरह उगने दे रहे थे, बहुत साइलेंटली और पेशेंटली। लेक्चर तो मैंने रितेश अग्रवाल के साथ भी खड़े होकर दिया है एक ही स्टेज पे, बट मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ। और वो करने के लिए मुझे वो लोग चाहिए जो अनवेवर्ड हो। मेरे नाम का अर्थ यही है, चल मतलब मूवमेंट, निश मतलब नो मूवमेंट मतलब अद्वैत, मतलब शून्य, मतलब नो मैटर, नो वेव एट ऑल, अनवेवर्ड। ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है, मेरे नाम निशा डाल दी होगी, मुझे सब में ये चाहिए। तो अगर तुम ये कर सकते हो, तो तुम मेरे ख्याल से हमारे मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हो। वरना बाकी इंटर्न्स की तरह कुछ दिन आओ, फ्लर्ट करो और निकल लो। बात समझ में आई पूरी? आई ना? हाँ।